हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है भावेश। मेरा नाम है मनोज। ये है मनु नहीं मनु मनु डार्लिंग। नहीं मनोज। ओके, तो आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो है 10 सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट एसएसजी कमांडो। तो ये कौन से एसएसजी कमांडोज है, किसके बारे में है पता नहीं। जतिन, ये किसके बारे में था? अच्छा, पाकिस्तान के कमांडो के बारे में था। ओके, तो वीडियो पे डिटेल डाला करना। जो भी वीडियो है वो जतिन सेलेक्ट करता है, इसलिए हमें पता नहीं होता, हम सीधा आके रिएक्ट करते हैं। तो ओके, देखते हैं। क्यों बाबू? तो चेहरे पे एक स्माइल। ओके। We're exploring the military of Pakistan, but more specifically, Pakistan's Elite Special Forces Unit, the SSG. These guys are no joke. Hey guys, what's going on? My name is Leroy Kenton and you're watching FTD Facts. So let's get into 10 surprising and interesting facts about the SSG. So the first thing, the SSG, or Special Service Group, is the main Special Operations Task Force of the Pakistan Army. While the rest of the army is well trained in regular combat situations, these SSG commandos are skilled in special skills like counterintelligence and covert operations. The headquarters are at Tarbela Cantonment and it's located in the Harapur district of Pakistan. It's headed by a major general and divided into 8 battalions. Each battalion has 700 men in 4 companies, with each company split into platoons and then into 10-man teams. Each battalion is commanded by a lieutenant colonel. Now, the earlier thought process of hiring recruits was to spend as little time as possible training them. This is because in the early days after getting independence from the British, Pakistan really lacked certain resources and they had to do the best with what they had at the time. The SSG was first called the 19th Baloch and was created in 1956 after combining the 7th and 10th Baloch regiments and the 312 Garrison Company. The SSG's initial training and orientation regarding tactics was based on the US Special Forces program, with whom they cooperated closely with in the Cold War years. The SSG initially had 6 companies, and each company had specialization units specialized in desert, mountain, ranger, and underwater warfare. And later on, Chinese training, tactics, weapons, and equipment were also introduced. Now, the SSG used guerrilla tactics to fight off their enemies and use the element of surprise whenever and wherever they could. The special operations that they take part in require the fighters to be very still and very stealthy. Their first major deployment came during the Indo-Pak War of 1965, and by the year 1971, the SSG had grown to 3 battalions with 1 permanently stationed in East Pakistan. The training program has evolved over the years, where it incorporates many new elements of modern warfare, but some things have remained the same. The SSG officers must have at least 2 years of prior military experience and volunteer from other formations for 2-year assignments with the SSG. Non-commissioned officers and enlisted men volunteer from other formations to serve permanently in the SSG. All trainees must participate in a 9-month SSG course at Chirat, and physical training includes doing a 36-mile march in 24 hours. Training with the same people and the same instructor can get really tedious and also put you in danger of being obsolete, since the rest of the world is advancing with new training methods. So it's important that soldiers interact with other countries and also learn their ways of training. This is also a good way to keep the enemy tactics in mind. SSG conducts biannual exercises with the Turkish Special Forces, which have been designated as the Ataturk series. And during the 1980s and into the 1990s, the SSG held many similar training exercises with the US Special Forces. Now I'm going to briefly talk about the SSG-N. Now, these guys were actually created after the SSG Army. After the Indo-Pakistan War in 1965, the Pakistani Navy, under the advice of the US Navy, decided to create its own special warfare unit. The SSG-N was born in 1966, and by the year 1967, the United States had finally lifted the embargo on Pakistan, therefore allowing the United States Navy SEALs to provide their training and operational techniques to the SSG-N. And speaking of the SSG-N, the current SSG-N headquarters are in Karachi, Sindh, and they were modeled after the American Navy SEALs and the
British Special Boat Services, or the SBS. Because US SEALs had supervisor training, the training of the SSGN is one of the toughest training programs in the entire world. The dropout rate for the SSGN is 80 to 90%. Now getting back to the SSG Army, so let's take a look at their uniforms. They're really distinguished by the insignia and the maroon berets with a silver metal tab on a light blue felt square with a dagger and lightning bolts. There's also a wing on the right side of the chest, and the combat uniform of the SSG is similar to the US woodland pattern camouflage coat and pants. Initially, the SSG were popular for their green berets with Baloch insignia back in the 1950s, but the SSG, they dropped their green berets and adopted the Baloch regiment's maroon berets. And the final thing I want to share about the SSG is that the SSG had been listed as the best special forces group ahead of the United States Navy SEALs and the British Special Air Service Group. Now this list was done by Business Insider Australia back in the year 2015, and it ranked them as the best of 9 top elite forces in the entire world. Now there may not necessarily be any real bearing to this ranking, however the SSG still has a lot of things going on for them that make them a very powerful force to contend with. This is also something that makes Pakistanis very proud. So that's all the facts I have for you about the SSG. I hope you enjoyed this episode, and if you did, leave a like on this video and also let me hear your thoughts and comments down below. And before you get out of here, here is another video that you can check out. It's right beside my head, and don't forget to hit that subscribe button and ring that bell if you're new here to FTD Facts, that is, so you can keep. तो फ्रेंड्स ये था वीडियो एसएसजी कमांडोज ऑफ पाकिस्तान। तो हाँ मनु बताओ। मुझे उनका नेवी अच्छा लगा और जो ट्रेनिंग थी ना वो बहुत अच्छी लगी। ट्रेनिंग में जो सारे जो कमांडो उनकी जो ट्रेनिंग थी वो यूएस की जो नेवी सील्स है उनके कंपेयरिंग में उनके साथ में उन्होंने की अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। और बाकी जो कमांडोज होता है उनको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। कमांडोज की लाइफ सच में काफ़ी टफ होती है, और आर्मी में से कुछ एक बंदे होते हैं वो सारे कमांडो बनते नहीं है, कुछ निकल जाते हैं ट्रेनिंग से वही कमांडो बनते हैं, और एक कोई स्पेशल ऑपरेशन होता है उसके लिए कमांडो यूज़ होता है। बाकी हाँ बाबू कुछ बोलना है? से समथिंग अबाउट ट्रेनिंग 9 महीने लगते हैं ट्रेनिंग में। अच्छा, जिनमें स्पेशल स्किल्स होती है उनको ही। हाँ वो तो हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। बाकी एसएसजी कमांडो है जो पाकिस्तान की, उनके काफ़ी नाम है और काफ़ी टफ हैं, और जो अपने कंट्री के डिफेंस में उन काफ़ी अहम योगदान भी देते हैं। काफ़ी किरदार रहता है उनका, काफ़ी अहम किरदार रहता है। बाकी तो कमांडोज होते हैं, कमांडोज होते हैं वो। उनके उनसे टक्कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वो भले कोई भी हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी कोरोना जो डेल्टा प्लस वेरिएंट चल रहा है तो वो शायद आ रहा है धीरे धीरे, तो इंडिया में भी शायद कुछ जगह आ चुका है वो। तो बाकी और भी अदर कंट्रीज़ में आ चुका है। तो अगर आपके कंट्री में नहीं आया है तो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना कीजिए कि वो आए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलतफहमी रहते हैं, काफ़ी लोग पॉलिटिकल इशू में भी रहते हैं कि यार ये तो कोरोना किसी कोई पार्टी लाई है या कोई गवर्नमेंट लाई है। ऐसा भी हमने काफ़ी सारी कंट्रीज़ देखी है, और कुछ सुपरस्टिशन भी होते हैं कि नहीं यार वैक्सीन नहीं लगाए हम, वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी। तो प्लीज़ वैक्सीन लगाएं आप। आपका जब भी नंबर आए, आपका जब भी टर्न आए, आप वैक्सीन लगवाइए और अपने आप को सेव कीजिए, क्योंकि आप घर से बाहर जाते हैं, आप फिट हैं, आपके घर में बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, उनका ख्याल अगर आपने नहीं रखा और आप अगर ऐसी कोई बीमारी लेके आए, आपको कुछ नहीं होगा, उनको कुछ हो गया तो आप फिर किसी और को दोष दें तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि किसी के घर में अगर कोरोना आ रहा है तो वो घर का मेंबर ही लेके आ रहा है, कोई बाहर से लेके नहीं आ रहा है। तो घर का मेंबर अगर बाहर जा रहा है तो अगर वो सेफ़ है, वो अपना ध्यान रख रहा है, वो मास्क पहन रहा है, उसने वैक्सीन ली है, वो बराबर सैनिटाइज कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर वो यूज़ कर रहा है तो ये चीज़ें घर में नहीं आएगी। तो प्लीज़ अननेसेसरी कहीं जाएँ नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं कहीं भी ज़रूरी है तो बिल्कुल जाएँ, वहाँ पूरा ध्यान रखिए। सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी मास्क प्रॉपर पहनिए, और WHO की जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए। गाड़ी में जाएं, कहीं भी जाएं, पब्लिक प्लेस में जाएं, कहीं भी जाएं तो मास्क पहनिए, लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखिए। बाकी जो सिचुएशन इंडिया में हुई है वो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी, और जो नेक्स्ट वेव है उसके बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी सारी डेथ हो सकती है अगर वो आ गया तो वैक्सीनेशन ही उसका इलाज है। तो प्लीज़ वैक्सीन कराएं। काफ़ी जैसे कि मैंने वैक्सीनेशन करा दिया है, मनु ने वैक्सीनेशन करा दिया है,
तो बच्चों की हुई नहीं है तो भाऊ के लिए थोड़ा है, तो ये घर के अंदर ही रहता है, घर से बाहर जाता नहीं है, तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट शायद 2-3 महीने में बच्चों के लिए भी लेके आएगी। वैक्सीनेशन ही कारगर है, वैक्सीनेशन से ही आप सेफ हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई बोले कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना है तो प्लीज़ उसकी ना सुने, वैक्सीनेशन पहले करवाएं। तो ये एक मैसेज था मेरी तरफ से, प्लीज़ आप सेफ रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और बाहर जाएँ तो मास्क पहनिए। तो इसी मैसेज के साथ वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए मैसेज के साथ। ओके फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।